Algebra Maths 1 with the chapter 1, that is linear equation in two variables. So to before start with this chapter solving, firstly we will be seeing about the what is the linear equation. So linear equation, that is having the name as the line. So line, that means it is in the linear form. सो जैसे कि हम ग्राफ में देखते हैं, प्लॉट्स वगैरह देखते हैं. सो सपोज दिस इज द ग्राफ विच आई हैव प्लॉट हियर. सो the equation which can be obtained by joining of the coordinates and all, getting the straight line which is represented, we are representing it with the y is equals to mx plus c. So this equation is the linear equation, that is the equation of the line, where m is the slope. So we are studying about this equation. So for representing this equation, we are requiring of the coordinates, that is the x coordinate and y coordinate. So to study with this, so the linear equation, an equation which contains two variables and the degree of each term containing variable is 1, is called as a linear equation in two variables. So the general form of the linear equation in two variables is written as ax plus by plus c equal to 0. So this is the general form of a linear equation in two variables. So this is basically the form of the general form of a linear equation in the two variables. Nextly we will be seeing that सो हियर ए बी सी जो है, यहाँ पर जो ए है, बी है, सी है. सो दिस ऑल थ्री आर हियर, दैट आर द रियल नंबर्स, एंड ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो. मतलब ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो. सो दिस इज बेसिकली द लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कंसेप्ट. सो यहाँ पर जो होता है, मतलब कि ए और बी की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो कभी नहीं हो सकती. सो अगर ये क्यों नहीं हो सकती, सपोज इफ़ यू हैव टेकन ए वैल्यू टू बी ज़ीरो, सो ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो. So it will be the by plus c equal to 0. By plus c is equals to 0. That means it is the linear equation in the one variable. So it is having the only y as the one variable. So here in the textbook, it is given as one of the examples of the linear equation in two variable, that is 3x minus 4y plus 12 equal to 0. So this type of the equations are considered in the linear equation in the two variables, because here there are the two variables, that is the x and the y. So next is that in the is the general form of the equation. So it can be represented as 3x is equals to 4y minus 12. In this way it can be converted. So next we will be studying. So as there is the activity, complete the following table in the textbook given. So there are the various different equations which are given. So first equation is 4m plus 3n is equals to 12. It is given, is the equation a linear equation in two variables? So it has asked whether this equation is in the two variables. So its answer is yes. As we can see here, one variable is m and one variable is n. So this is the equation which is in the two variables.
Next we have asked the equation that is the 3x square minus 7y is equals to 12, 13. So whether this equation is in the two variables or not, so the answer is no, because this equation is having the square. So because of this square that it will be the, मतलब यहाँ पर जो है वो कर्व मिलेगा. It is not in the kind of the linear equation. Next is third, we are having root 2x minus root 5y is equals to 16. So whether this is in the two variable, so the answer is yes. Next fourth question is there, that is 0x plus 6y minus 3 equal to 0. So as it is 0x, so 0x, because of this value will be 0, as we have seen that the value of the a, it is comparing with if we compare this with the general equation, that is it will be the ax plus by plus c equal to 0. So here the value of a is equals to 0, which is not the condition satisfied, so this will not be in the linear equation in two variables. Next we have given that 0.3x plus 0.0y minus 36 equal to 0. This will also be not, as here the b should not be equal to 0. This condition is violated. Next is sixth, which is given here. So sixth यहाँ पर क्या है कि 4/x plus 5/y is equals to 4. So whether this is in the linear equation, so the answer is yes, as we can write 1 upon x is equals to m, 1 upon y is equals to m. So 4m plus 5n is equals to 4xy, which can be 4. So this can be written as 4m plus 5n is equals to 4. So it is in the linear equation. Next we will be seeing that seventh question which we have given here in the complete the following table of this. So it is 4xy minus 5y minus 8 equal to 0. This is given. So whether this is in the linear equation or not, so if we consider that it is having the multiple here, that is x and y, so it cannot be in the linear equation, so the answer will be no. So simultaneous linear equations, next concept is there. We think when we think about two linear equations in two variables at the same time, they are called as a simultaneous equations. Last year we learned to solve the simultaneous equations by eliminating one variable. Let us revise it. So next जो concept है, that is simultaneous linear equations. This is the next concept which is we are seeing. सो यहाँ पर जो दिया है कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या है कि जो वी थिंक अबाउट द टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एट द सेम टाइम. जब हम दो लीनियर इक्वेशन, सपोज एग्जांपल में यहाँ पर आपको एक बताना चाहूँगा. सो आपके टेक्स्ट बुक में ही यहाँ पर दिया गया है एग्जांपल, दैट इज 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8. और एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है दैट इज 3x प्लस वाई इक्वल टू 2. हेलो अनुभव वर्मा, हेलो. सो यहाँ पर दो हम जब लीनियर इक्वेशंस का अगर स्टडी यहाँ पर साइमल्टेनियसली करते हैं, सो देन दैट इट्स कॉल्ड एज द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस एंड वी ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशंस. सो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पर. सो वी हैव टू एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल, सो बाय द एलिमिनेशन मेथड. सो बाय एलिमिनेशन method. So as we are having equation that is 5x minus 3y equal to 8 and 3x plus y equal to 2. So we can multiply the equation. Suppose this is equation 1, this is equation 2. Then we can multiply the multiply equation 2
by, we can eliminate y, so we can multiply here with 3. So multiplying equation 2 by 3, 3 multiplied by 3x plus 3 multiplied by y, which is equals to 3 into 2. So here it will be 9x plus 3y is equals to 6, which is equation 3. So now we can add the equation 1 and equation 3. So adding equation 1 and equation 3. So now we can add equation 1 and equation 3. So we will get, that is 5x minus 3y equal to 8 plus 9x plus 3y is equals to 6. So here we will get that this 3 plus 3y minus 3y will get cancelled, and here we will get 9 5 14x is equals to 14. So x is equals to 14 divided by 14, which is equals to 1. So therefore x is equals to 1, which is having the value x is equals to 1 here. Similarly, we can calculate the value of the y. So value of the y can be calculated by putting in the equation. Suppose we are putting this equation 1 in this first equation, that is 5x minus 3y equal to 8. So putting the x value in इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद ये इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी कि 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8. सो 5x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड वी हैव गॉट द x वैल्यू टू बी 1. सो x की 1 की जो x इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 5x माइनस 3y इक्वल टू 8 में. सो 5 इंटू 1 माइनस 3y इक्वल टू 8. So it will be 5 minus 3y equal to 8, minus 3y is equals to 8 minus 5, minus 3y equal to 3. So y is equals to 3 divided by minus 3, y is equals to minus 1. So here we got the values of x and y, that therefore x is equals to 1 and y is equals to minus 1. These two values which we have got. So this is the method of the elimination where we have eliminated the one variable. यहाँ पर हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया है और उससे सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू यहाँ पर 1 एंड y की वैल्यू यहाँ पर -1 हमें मिल गई है. सो इन दिस मेथड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ द एलिमिनेशन आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट सिमिलर काइंड्स ऑफ द एग्जांपल्स है. एक जो एग्जांपल 2 है वो मोस्टली आपके मतलब एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, दैट इज बिकॉज ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. सो वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जांपल 2 जो कि सॉल्व एग्जांपल में आपके टेक्स्ट बुक में है. सो जो कि है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 29 एंड 5x माइनस वाई इक्वल टू 18. सो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस इक्वेशन को 2 से. सो इट विल गेट 10x minus 2y is equals to 8 into the 36. So suppose this is equation 1, this is equation 2. Then we will get here, so adding, this is equation 3, adding equation 1 and 3. So यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं इन दो इक्वेशन को. So that is adding equation 3x plus 2y is equals to 29 एंड जो हम ऐड करनी हमें जो ऐड करनी है इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन 3, दैट इज 10x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 36. सो ये ऐड करने के बाद दिस प्लस 2y माइनस 2y विल गेट कैंसल. यहाँ पर आपको मिलेगा कि 13x इज इक्वल्स टू 65. सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस. सो x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल्स टू 65 डिवाइड बाई 13 विच इज इक्वल्स टू 5. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5. हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी. सो x की वैल्यू यहाँ पर मिलने के बाद हम जब यहाँ पर देखेंगे कि x इज इक्वल्स टू 5 है, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ द y ऑल्सो. सो पुट
x is equals to 5 in इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमें यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 29। यहाँ पर 15 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 29। 2y इज इक्वल्स टू 29 माइनस 15। 2y इज इक्वल्स टू 14। y इज इक्वल्स टू 14 डिवाइड बाय 2, y इज इक्वल्स टू 7। So therefore we got x is equals to 5 and y is equals to 7 here as these two equations. So in this way you can solve this. नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स विद द जो कि आपके अगले जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स वी विल बी मूविंग विद द प्रैक्टिस सेट। सो वी विल बी मूविंग विद दैट द प्रैक्टिस सेट। हम यहाँ पर मूव करेंगे कि जो प्रैक्टिस सेट जो है दैट इज द 1.1। सो प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। सो प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन 1 इज कि वही हमें यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सो वी आर हैविंग हियर कि 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 विच इज इक्वेशन 1 यहाँ पर दी है। देन 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12 दैट इज इक्वेशन 2 यहाँ पर दी है। लेट्स ऐड इक्वेशंस 1 and 2। सो वी कैन डायरेक्टली ऐड हियर द इक्वेशंस। सो प्लस 3y माइनस 3y विल गेट कैंसल हियर। देन यहाँ पर 7x इज इक्वल्स टू 21 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 21 डिवाइड बाई 7 विच इज इक्वल्स टू 3। x इज इक्वल्स टू 3। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 वी हैव गॉट हियर। सो वहाँ पर एक्टिविटी दी है प्लेस x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। सो x इज इक्वल टू 3 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में हमें प्लेस करनी है। सो इक्वेशन 1 क्या है 5x प्लस 3y इक्वल टू 9। So putting this value of x 5 into 3 plus 3y equal to 9. 15 plus 3y is equals to 9. 3y is equals to 9 minus 15. Y is equals to minus 6 divided by 3. Y is equals to minus 3. This is the value y equals to minus 3 we got. In this way you can solve this activity and complete. नेक्स्ट जो कि हम यहाँ पर देखेंगे कि जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26 एंड a प्लस 5b इक्वल टू 22। सो दिस वी कैन सॉल्व बाय जस्ट एडिंग। सो एडिंग सो आप भी बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही सॉल्व कीजिए कि पहली जो इक्वेशन दी है उसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। देन दूसरी जो इक्वेशन दी है दैट इक्वेशन 2। सो sorry we don't have to add here, so subtracting equation 1 and equation 2। so as we subtract, so 3a plus 5b equal to 26 and a plus 5b equal to 22। subtracting here minus plus sign will change minus, so plus 5b minus 5b will get cancelled। 3a minus a which is 2a is equals to 26 minus 22 which is 4। so a is equals to 4 divided by 2 which is equal to 2, therefore a is equals to 2। next put the value of a in इक्वेशन आप किसी भी इसमें पुट कर सकते हैं। सपोज वी आर पुटिंग इन द इक्वेशन सपोज 2। सो इक्वेशन 2 में हमने ये वैल्यू पुट करनी है। सो ए वैल्यू 2 प्लस 5b इक्वल टू 22। 5b इज इक्वल्स टू 22 माइनस 2। 5b इज इक्वल्स टू 20। b इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 5। b इज इक्वल्स टू 4 दैट इज
b is equals to 4. So a and b value we got here. A is equals to 2, b is equals to 4. नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स सो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे. दैट इज x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7. सो यहाँ पर जो है कि कौन सा आसान है. सो इक्वेशन 1 हमने यहाँ पर दे दिया. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. सो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 3 से. मल्टीप्लाई equation 1 by 3. So it will be 3x plus 7y. 7 3 is 21y is equals to 30. So adding now we can subtract these two equations. So subtracting equation 2 and 3. So 3x minus 2y is equals to 7 and 3x plus 21y is equals to 30. Subtract, subtract, subtract. So plus 3x minus 3x will get cancelled. Minus minus will these two will get plus. 21 plus 2, that is minus 23y is equals to minus 23. Y is equals to minus 23 divided by minus 23, which is equals to 1. So y is equals to 1 value we have got here. Then put this value of y in equation this, that is 3x minus 2y is equals to 7. So 3x minus 2 multiplied by y value is 1, which is equal to 7. 3x minus 2 equal to 7. X is equals to 7 will get plus 9 divided by 3. X is equals to 3. So here we got the value of x is equals to 3 and y is equals to 1. Next, the third question is that which we are seeing. Third question is 2x minus 3y is equals to 9. That is 2x minus 3y is equals to 9. And 2x plus y is equals to 13. 2x plus y is equals to 13. So similarly multiplying equation, this is equation 1, equation 2. Multiplying equation by 3. Multiply equation 2 by 3. That is 3 into 2x plus 3 into y, 13 into 3, which is equals to 6x plus 3y is equals to 39. Now adding equation 1 and 3. So 2x minus 3y is equals to 9 plus 6x plus 3y is equals to 39. Adding these two, so 6, 7, 8x is equals to 1 minute. That multiplying equation 2 by 3. So 3 to 6, 3 now 3y, 13 3 is 39. It will be 48. So x is equals to 48 divided by 8. X is equals to 6. That is value of the x we got here 6. So putting this value in the equation this, so 2 multiplied by 6 minus 3y is equals to 9. 12 minus 3y equal to 9. Minus 3y is equals to 9 minus 12. Minus 3y is equals to minus 3. Y is equals to 1 we got here. So the value of x is equals to 6 and value of the y is equals to 1 we have got here. So remaining questions you can solve. So as similar these questions are there. If you faced any doubt or the difficulty in solving the next further questions, सो यू कैन आस्क रिगार्डिंग विद दैट. अगर आपको कुछ अगर आगे जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम वगैरह आती है, सो आप कमेंट बॉक्स में इसके बता सकते हैं. सो वो भी सारे क्वेश्चंस जो आपके डाउट्स वगैरह होंगे, सो आप वो मैं आपको मतलब सॉल्व करके अगले वीडियो में बताऊंगा. सो इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर आपको मतलब ये वीडियो अगर पसंद आया होगा और अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसे ही कंटिन्यू होता चला जाए, so you can like share and subscribe to this video. Thank you for
joining this live. Thank you.